गाइस डिस्क्लेमर। और तुझे शॉट पीने के पहले ऐसा करना पड़ेगा, वो ऐसा डांस जमाल जब ये वाला डांस करना पड़ेगा। इफ आई प्ले जमाल जमाल ऑन यूट्यूब चैनल फाइनली 620 पहुंचा है, उधर ही बैंड हो जाएगा वापस। अपन गा सकते हैं ना, जमाल जमाल अपन गा सकते गाना किसको है? मेरे को तो नहीं सुनील, गाना। अगर सुनील गाएगा तो मैं नाच। हैं। हाँ, तेरे शॉट पीने के पहले तेरे मैं गाऊंगा, तेरे को वो करना पड़ेगा। एक तू फिर सिगरेट भी जला ले। तू 4 बियर पी ले, मतलब आई ओनली हैव ब्लॉब्स ओवर द स्क्रीन। सेंसर 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 सेंसर। चल टाइम टू बॉबी दे। वार 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 आ ओम वाराय नमः ओम वार। जल्दी चालू कर। Trigger warning, trigger Get over warning, everything. trigger warning. Alright, 3, 2, 1. Can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. वेलकम बैक टू क्या पका रहा है। और एज यू कैन सी ये थोड़ा सीजन एंड स्ट्रगल चालू है यहाँ पे, मतलब प्रीमियर लीग सीजन का नहीं, हमारे लाइफ के सीजन का एंड वेयर ऑल आई फील स्टम्बलिंग ओवर द लाइन टुवर्ड्स न्यू ईयर्स ईव। बहुत बिल्कुल मन तो नहीं लग रहा है। निर्वाण इज वेरी ईगर टू से दीज 3 letters that he can't say. And Sunil Now will we tell, started. Game has started. and Oh, Sunil, never explain the game only how can you Sunil will explain? tell you जल्दी why. explain कर। Sunil will tell you why. जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंस लास्ट वन के प्रेडिक्शन में निर्वाण लास्ट आया था, तो वी आर मेकिंग अ गेम कि आज अगर निर्वाण ने वार मेंशन किया वीडियो में, या वी भी बोला, ए भी बोला, आर भी बोला, तो ही हैव टू ड्रिंक दिस वेरी गुड लुकिंग ऊपर है हाँ, तो इतना वो सीखा नहीं है क्या? लास्ट उधर मंथ का और ये मंथ का दोनों का पनिशमेंट होगा। नहीं, एक नहीं, तो मेरे को ये शॉट बात- पीने का है, ये बात और दूसरा खत्म नहीं। मैनचेस्टर यूनाइटेड के शॉट ग्लास में डबल ये मतलब मेरा खत्म नहीं हुआ है, तो और एक प्रेडिक्शन बाकी है। तो वेट, बट द नेक्स्ट गेम भी गोस इन हाफ इनटू जैन, तो दैट्स जैन ऑफ दिसंबर प्रेडिक्शन। दिसंबर। अच्छा ठीक है, एक वीक बाकी है, तू रुक, मैं तेरे को हराएगा। अरे तू सबसे नीचे दिसंबर में भी। तो मेरे को भी नहीं हरा सकता है। Yeah, आई थिंक मेरे को तो यार तो गेम एक्सप्लेन कर दिया है, तो नाउ गेम हैज बिगन। इफ यू मेंशन तो क्या है गेम? बेसिकली जो भी पहली बात वार, देन यू हैव टू ड्रिंक अ ड्रिंक। चल जमाल जमाल का जमाल जमाल from now on VAR is going to be called this is my punishment, happy beeping. हाँ, ये एपिसोड सीधा संडे को जाएगा भाई। इतना ओके, एपिसोड बहुत केओस में ब्रो। दिस एपिसोड बिफोर इट स्टार्ट्स ओनली बहुत केओस होने वाला है, तो लेट्स क्विकली गो इनटू दिस। इफ फॉर द वन हु आर वाचिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, हमारा हर एक महीने में एक प्रेडिक्शन सेगमेंट रहता है, where we predict the Arsenal game, United game and one extra game. End of the month we tally the total. Whoever has got the most points wins. The last person loses and the winner gives the loser penalty of sort. How ठीक am I है? the loser? He's the loser. What is this? ये मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड ने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया था, जो खत्म नहीं हो रहा है, इसलिए तुझे पीना पड़ेगा। Like I was saying, away from all of this chaos, it has been a terrible end of season. मतलब पकड़ा है, सबको मूड नहीं आ रहा है। नहीं, मेरा तो मूड बहुत अच्छा है। बॉक्सिंग डे वाज ग्रेट, बहुत मजा आया। कॉन्ट्ररी टू द ये मेरा ट्रेडिशन है, मैं तोड़ने वाला था इस बार की आप पार्टी नहीं करते, स्पेशली वेस्ट हैम गेम हारने के बाद, बट थैंक गॉड मैंने गेट टुगेदर रखा। लेट नाइट गेम, बाय द टाइम गेम स्टार्टेड हम लोग वैसे भी इतना ड्रंक थे कि समझने वाला नहीं है, मगर जो कमबैक विन था यार, बहुत मजा आया। And read the script that I shared on the group. I think वो screenshot डालूंगा। Let's see how that goes. मैं comparison तो डालूंगा यहाँ पे। 20 minutes after United won that game, I was like, bro, this is happening. नहीं यार, लेकिन honestly ठीक है, it was a good game. If nothing, one offside goal got ruled out and everything, still you all managed to come back. मैं वही Against बोला Villa, for a that's a good one. change की जे I'll say one thing, क्योंकि जो प्रशम और प्रशांत ने एपिसोड किया था उसमें भी forgot one thing which they said कि Villa plays a high line. So if you हाँ, beat the मैं high actually line, वही बोलने वाला you can easily with the players we have with pace, the minimum you can do is at least get 1 goal. ठीक है? So basically, Rashford is now officially irrelevant after Garnacho's come there. नहीं, पर गर्नाचो वाज प्लेइंग ऑन राइट, रैशफोर्ड लेफ्ट, काफी अच्छा लग रहा था वो। Yeah. एंड रैशफोर्ड फाइनली बहुत दिनों बाद अच्छा लग रहा था। एक दो एंड run ब्रूनो की- का तारीफ करना पड़ेगा यार, ब्रूनो का पासिंग वाज लाइक टू गुड। मैं एक ही चीज इंडिविजुअली बोलूंगा, ठीक है, कि टू लुक एट द प्रीमियर लीग सीजन सो फार एंड थोड़ा विल टॉक अबाउट दिस लेटर आल्सो, इफ आई हैड टू से दैट 2 players who have stood out for me despite form, despite sides in the creative role have been Bruno and Odegaard. And I'm not saying this only because United Arsenal fan hai. Look, City have their set of players, they rotate around a lot. Pep does it, he changes it. John Stones comes in and something attacking. Liverpool के लिए you have enough number 10s, but you have Trent now playing sometimes, ठीक है? But the players who've been doing it for 2 seasons or 3 seasons almost, Odegaard and Bruno, I mean, it's timeless. It's sad United cannot finish the chances he creates, and the off chances that he has a bad game where he has, and I've criticized him for it because
बहुत रोता है because he gets frustrated. Captain cannot cry, but you cannot just see he's produced 100 chances, right? What kind of Indian masculine stereotype are you putting? Boys don't cry. That's not what I said. He cries too much. Where I pointed, I was like, get on with the game, right? कुछ होने वाला That's नहीं what है. I always also said. I was like, bro, as a captain, he's spineless. And one thing I can say about Odegaard is you can understand why he was coveted since he was 15. And Madrid took him to Castilla where he got upset. But now everything's said and done. He Bro, looks. his touches yesterday was. कल का गेम भी हाँ Bro, Odegaard हर एक टर्न करता था, या तो प्लेयर को बीट करता था, या तो मैक करता था. Somehow the ball just does what he thinks he wants it to do. West Ham यार they did the same thing to us, the same thing to They you. pretty No, much no, did. not- Two chances, two goals. No, but they were What's the better. first They chance? was chance? नहीं हमारे गेम West Ham तो was way better, guys. West Ham तो हमारे अगेंस्ट तो बहुत ही एफॉल था till 70th minute. अगेंस्ट आर्सेनल उन्होंने कुछ तो क्रिएट किया, प्रेस किया, शट डाउन किया. They were playing well. That आर्सेनल was not saying, but it was against the run of play, an unfair goal which broke the entire momentum. Bro, for 20 minutes I had a hard on unfair goal. watching that game. Unfair goal क्या Of course, no shit. The ball was out of play. The reason they gave it was उन लोग ने because और ऊपर चेक भी किया हाँ ऊपर चेक किया था. मुझे तो बड़ा अच्छा लास्ट डिसीजन क्या मुझे था? वो सिस्टम काफी अच्छा लगता है लास्ट डिसीजन क्या था? आई लाइक दैट सिस्टम जो ऑनलाइन चेक करते हो मेरे को बहुत पसंद है हाँ तो तुझे कैसा लगता है बहुत ही सॉर्टेड है जब ही काम करता है. क्या क्या काम Because what was the final decision yesterday? There is inconclusive video footage to determine ये whether it was किसने out बोला for the भाई benefit of doubt. किसने बोला Bro, the commentator announced it. पर किसने चेक किया वो तो बता दे ने check नहीं करेगा किया. मैं मर जाऊंगा मंडे को फर्स्ट जनवरी को वीडियो आएगा सब गेम्स के बाद. नहीं लेकिन लोग क्या सिंपली पुट But it apart from you wanting to feed me the shot, उन लोग ने inconclusive बोल के गोल दे दिया. पर वो लाइन क्यों नहीं बनाया जो वर्ल्ड कप में लाइन बनाते थे वो लाइन Because वो इसमें लाइन थोड़ी है भाई क्या है bro, it's supposed to be goal line technology, not fucking camera. और ऐसा तो मैं सुना था गोल में कुछ चिप भी है जिससे बॉल मालूम में पड़ता है चिप होता है. पोजीशन का Apparently बॉल में एक चिप होता है जिससे टॉप व्यू मिलता है. एंड ये सेम चिप है क्या जो मोदी ने इसमें डाला था नोट में 2000 पक्का बैन है तुमने क्या डाला है इसमें ब्रो? episode नहीं कर रहा है this episode has to be edited fully guys मतलब 6 minutes into this episode तेरा ज्यादा पनिशमेंट तेरा दारू. पर ओडेगार्ड और ब्रूनो के बाद पे मैं ये बोलना चाहूंगा सिटी के बाद ऐसा कोई लाइक केविन डी ब्रायने मिसिंग है मगर लुक एट देम यार इतना गेम ड्रॉ और हारने के बाद में दे आर जस्ट 2 पॉइंट्स अवे गेम इन हैंड पे अगर जीत जाएंगे तो मुझे वही बोलना था कि ऑल टॉक्स असाइड ठीक है बाहर का भी राउंड ऑफ मुझे एक ही चीज बोलना है कि हैपेंड वंस दिस सीजन इट हैपेंड ट्वाइस अगेन. Imagine not learning and not making technology better in a season when दो बार हो गया है तो 3 times in 18 game में मैं वही बोलूंगा कि इतना कोई inconsistent रहता है ना तो we call them BMC of Bombay. मतलब वो flooding होता है तो You're feeling left out about Might being as well. responsible for having the channel. He's also champion. अभी मेरे को इतना दिमाग मलापन गया. इन शॉर्ट काफी टीम्स ने अपने चांसेस नहीं लिए ये लिवरपूल बॉच लास्ट Bro, we टू had गेम्स 30 shots. लिवरपूल आर्सेनल ड्रॉ हो गया लिवरपूल ने 2 कोई- बॉच किया. लिवरपूल यूनाइटेड फॉर लिवरपूल ड्रॉइंग टू यूनाइटेड एट होम वाज द बिगेस्ट क्राइम दे कुड हैव कमिटेड ठीक है. लिवरपूल आर्सेनल ड्रॉप अभी ना लिवरपूल तो ये ऑब्वियसली फेस्टिव पीरियड जो हम लोग गेस कर रहे थे कि कौन टॉप पे रहेगा आई थिंक लिवरपूल हैज कम ऑन I mean, we have a couple of games still left, okay? But I mean, obviously there are easier fixtures. What? Who's Liverpool playing this weekend? Liverpool is playing Newcastle. Oh, आर्सेनल का फुलम अवे जो अगेन लंदन डर्बी है But after yesterday, I don't think they're gonna fuck that up. It was, bro. मतलब कितने chances? Like for the first time, everyone was just like, they're missing Havertz. They're missing Havertz. लोग पागल हो रहे थे, bro. हाँ हैवर्ट्स क्यों नहीं था कल Yeah, a suspension, ना? मैं सोच रहा था कि वो आएगा यू गाइस आर क्लियरली मिसिंग अ स्ट्राइकर जो मैं थोड़े Bro, मतलब वही बोला कि we have आइवन टोनी अगर We have तुमने a- साइन किया तो देन यू रियली शो समथिंग जो तुम लोग जीतना चाहते हो नहीं लेकिन guys बहुत Bro, simple है because ना. no, every time we go all out and try to put a big bid also for a striker, suddenly out of nowhere, Nketiah and Jesus are like the best strikers the world has ever नहीं seen. कल But तो we जेसूस का तो saw- मैं देखा It's like when- open header एक Three open chances. You know, it's like putting people on One shot- PIP. When you put them on PIP, they suddenly show form. Yeah, before yeah, they throw down. हमारा Now, माशा you Rashford हमारा take 5 million every time you score a goal. भाई मतलब एक ही चीज है ना
Arsenal have a team in which they create so many chances for the number 9, but he cannot score. We have a beautiful number 9 for which we cannot create chances. The irony is not lost on me. वही हो रहा है, ठीक है? But Ian Wright, actually, Owen Hargreaves mentioned this yesterday, which was very smart. Is our gameplay is full wing play and crosses to a certain degree. We don't have a single player in the team who's above 5'9". क्या करेगा क्रॉस डाल? हाँ तुम्हारा वो भी है लाइक बहुत छोटे छोटे प्लेयर्स है वो बॉल आ रहा है उड़ के पर कौन हेडर वो हेडर वाला गेम नहीं है तुम्हारा. But Phil, this shows your weaknesses like Martinelli and Saka were struggling to put grounded balls yesterday. ठीक है? They were both so average. Because there were always 5 people in the box. So how do you put a grounded Which ball? is why you need aerial. Which is why you need to beat You teams need who to have counter that you. personality, yeah. तुम लोग counter करते हैं तो तुम लोग को ऐसा चाहिए. I am not. Oh God. I'm saying this. Weghorst kind of a player is not brought in for his goal scoring ability, but technically how he makes the team tick differently, where teams are trying to outpush you out. Right? He was pulling players away. What do you have in a game like yesterday? The idea of what he's saying makes perfect sense, but please do not mention that name because he's an abomination of a football player that doesn't deserve to be paid money to be on a screen to play football. I mean, he's still getting paid money and he's still getting it good for I'm just it. saying he doesn't deserve. नहीं पर I think they need a proper striker, Ivan Toney kind of striker जो पैर से भी खेले. Bro, to be honest, head right now, से I भी would take Nicholas Bentner. He is exactly what we need right now. I love Lord Bentner. Sue me. ये इनके legends है. ये Nicholas Bentner. फ्यूम्स जा रहा है क्या? इधर से सीधा फ्यूम्स उड़ रहा है. पेंट का फ्यूम्स है कि इसका Bro, fumes है? that time when he jumps in and becomes this little crab. Bentner बोल सकता है तो हम भी Weghorst बोल सकते हैं. It's okay. भाई 10 मिनट में उसने वेगोस एक सीजन से ज्यादा गोल किए. I'm out of words in this episode, guys. बहुत rarely ठीक होता है है. आगे आगे बढ़ो. नहीं, मैं बोला ठीक है, चलो. Arsenal Also the penalty last night, what do you think? You saw it? किसका? Saka was clearly tripped. soft penalty, but we've seen these given. He So you give shimmied, it. went in, हाँ वो posted. तो मेरे को तो टाइम लग रहा था. क्या तो पागल है क्या? साका अरे bro, मेड द मोस्ट ऑफ इट. वो उसको रोकने गया वो गिर गया. मेरा वर्डिक्ट सिंपल है. हैरी केन, जेमी वार्डी बहुत स्मार्ट थे. They used to use this to initiate contact and win penalties. ठीक है, अगर जो वो Saka तभी was allowed so था, learning even in VAR it was allowed. Saka was trying to cut him and go on to goal. His leg was out. He fell on his leg. Saka But was trying to go after the ball. He was trying to score. To my He was point, clean through. the official verdict was given कि there was enough contact but not sufficient enough for a yellow card for diving, not sufficient enough for. Basically, this is the highest form of democratic response that I've ever heard in my life. कि Pogba apology भी नहीं देना चाहता है, लेकिन कुछ admit भी नहीं करना चाहता है. And So everybody is right What was the difference in the scoreline? at that stage. No, in the game entirely. What was the difference in the scoreline? 2-1. 2-1 or 2-0? It would have been 2-1. I'm saying it was 2 goals. Correct. And it was these 2 decisions. Correct. With inconclusive fucking evidence. Correct. How the किसके fuck? किसने किया ये मेरे को बता देना. किसको ब्लेम कर. Oh my God. ये स्ट्रैटेजी अच्छा है. I'm not having another shot of this shit. Guys, anyway, ठीक है, चलो. Arsenal, United being United, ठीक है. Lose to Bournemouth. हाँ Beat यार, Aston अपना Villa. अपना मेरे को लगता है सीजन सम अप करता है ये पूरा जो Draw. वीक था. Anfield away. You lose- lose to West Ham and then जब कोई उम्मीद भी नहीं है, कोई होप भी नहीं है, and then you go and beat Aston Villa जो नहीं, but Boxing number Day, 3 number when you play on Boxing Day ना वो energy अलग ही है. नहीं, United is Aston Villa जो number 2 number 3 पे है, 2 goals up and then Boxing Day is for the underdogs. तो हमको अंडरडॉग बोलना चाहता है. yes, Sunil. खुद को क्या बोल रहा है? तू Aston Villa को जो हरा कि है, कोई उम्मीद नहीं है. जो Aston Villa अरे को मैं तो हरा खुद बोला कि तू गेम में वो underdog. हमारा बात है. तू नहीं बोल सकता. Oh, good God. Moving on, ठीक है. United has absolutely done its own wonders on its fans. I thought कि come 1st Jan will be 4th, but वो तो उम्मीद नहीं है अभी, ठीक है. Looking at the other teams, guys. It's not worked out. Annie, do you have a paperclip that is supporting your setup? No, it's just there for And show. one paperclip is going to bring everything down. This paperclip is kept by me to pinch some sense into both of you. Like, you all don't shut up after too long or 20 minutes. ये 8 मिनट और बफर है तुम लोग दोनों के लिए. Anyway, Tottenham guys. Tottenham have now lost कितना उनके last 5 games के I have lost count like 9 games में 5 games in a row. हाँ, 8 में से I think 5 or 4 ठीक है. Obviously injuries बोलेंगे, सब बोलेंगे. Brighton 4-2 like मैं वही बोलना चाहता हूँ. Best opinion is back, baby. If Tottenham complain about injuries, Brighton have more injuries than Tottenham also. ठीक है, Brighton was playing at home. Okay, fatigue जो भी है. हाँ उनके विंगर्स थे भी नहीं. हाँ, and they miss Romero.
अभी मैं वही बोला था, they were crying about Romero not being there. If he was there, everything would be different. Wait, And so this Tottenham squad doesn't have a striker period. Richarlison. Richarlison is the closest thing they have to a striker. He's the number 9. So when you go to the fantasy forwards, it's 0. Richarlison, yeah. No, एंड में वही होता है कि एंड में कब तक वो मिडफील्डर को गोल But कराओगे at least West Ham go कौन वॉन से कब तक गोल कराओगे आखिर में यू नीड अ प्रॉपर गोल स्कोरिंग But to be honest, जब Harry Kane था तभी भी it was Son was almost neck and neck with Harry Kane for goal. correct. बट लुक एट हैरी केन का गोल्स मिसिंग है ना अभी कौन मार रहा है वो गोल Richarlison. It's not that you don't expect Son to score as many goals. He scores that many, but you need one more person, na? मेरे लिए एक ही चीज है, see, Kulusevski. I still think that Spurs actually are very happy कि they have now. Oh, that Veliz he scored yesterday. Bro, the way he celebrated after being 3-0 down was... बच्चा यार बेचारा, we must not even I be think 18, 19. Oh, it wasn't even his debut. And he celebrated so much. He's played Has he scored? The goal? minutes played, 2 Is this his minutes, first goal? 8 minutes. Yeah, his first goal ever. Acha, acha. Let him celebrate. Don't be a Sweet. to it. Yeah. क्या celebrate किया bro? He was down 4-0, 80th, 70th minute you score a goal. यार Celebration. हॉलैंड का सेलिब्रेशन देखा ऐसा लग रहा था पूरा जो भड़ास निकाल रहा है पूरा 84 दुनिया। minute Almost you went रोने down वाला। and you get 3-2. नहीं हॉलैंड का फर्स्ट प्रीमियर लीग गोल भी था फर्स्ट प्रीमियर लीग गोल भाई लाइक ही हैज स्कोर्ड 5 इन चैंपियंस लीग 5 जो आर्सेनल ने भी नहीं किया है टोटल मिला के ऐसा होगा बट आई एम सेइंग कि इतना गोल मारने के बाद वो प्रीमियर लीग में फर्स्ट गोल You कितनी know, we बार have 2 more games minimum in Champions League, right? मिनिमम ना वो तुम्हारा मिनिमम ही हर बार रहता है उसके आगे मैक्सिमम मैक्सिमम तुम्हारा तो वो भी नहीं है। वो चलेगा। यूरोपा भी नहीं है। हमको चाहिए ये हमको यही यूरोपा चाहिए नहीं चाहिए हमको था। यही चाहिए था। End of the season when they blamed another Ten Hag, what a fuck our guy, we're not even in Europa. सबसे important- Forget qualifying for Europa, we went out in the group stages. सबसे important कप कभी में याद है। रखा हमको यही चाहिए था। हम लोग अभी भी सबसे इम्पोर्टेंट कप में है एफए कप में अभी भी है ठीक है Enjoy. I think we're going to get knocked out to begin in the first round. Anyway, ठीक है चलो see my thing about Spurs is very simple. बहुत लंबा हो रहा episode guys, थोड़ा फटफट जाते हैं. We wanted to keep under 25 minutes. Can it, I don't. ये विकेट नेक्स्ट गेम्स प्रेडिक्ट करते नहीं हैं मैं वही कहता Yeah, पहले yeah, that's Spurs, yeah, more like Spurs. मैं वही बोल रहा हूँ कि I think in terms of Spurs right, yeah top 4 What do you think of Tottenham? दे आर वेरी गुड Anyway, I think Spurs will still be in the top 4. ठीक है guys, that will not be a problem. Spurs will still be in top 4 race. United hopefully They're still gets in the nice. mid. I mean yeah, After losing 4 games. yeah because How far away are City they? have not played now. City No, have played but- game in hand. Not by a lot. अरे ये They're doing सीजन worse जैसा than जा better रहा है than आई थिंक इवन वी आर इन कंटेंशन ऑफ टॉप Yeah, ahead of us by No, 5. I did the math yesterday. Everyone is You're dropping closer to bottom half than top. 30 Spurs are 36 and we are सिर्फ एक ही 31. टीम कंटेंशन में नहीं है वो है चेल्सी Chelsea. You're not very far from Chelsea. पीछे आ You're closer to Chelsea than Hey, Liverpool. but Chelsea You're को तो आप लोग closer बहुत to अच्छे- Chelsea than Liverpool. कंपेयर भी Anyway, मत कर moving on, we spoke about everybody else. ठीक है, we round up with थोड़ा टॉटनमेंट्स. यहाँ पे क्लब 115. अभी क्लब 115 गया और एक इधर सऊदी में गया टूर्नामेंट खेल के आया. They've come back and Premier League rivals are I botched thought it. we were going too long on this episode. But we have to finish it. We can't leave it in halfway because we spoke too much rubbish in the middle. Basically, Liverpool and Club 115 again seem to be in contention. Arsenal has slipped to third in the title race for now. ठीक है? How? Because if City when they go above you, So we haven't yet. Na, so no. I cannot जो है वो factually मैं बोल सकता Who हूँ. are City playing this weekend? Tomorrow you mean this day after Sheffield. चल एक प्रेडिक्शन Hey, तेरा wait, लाइक last week Sheffield pulled an upset now. They drew with No, Aston they Villa beat them 1-1. 1-0. You mean Luton? They lost to Luton 3-2. I didn't know that. नहीं पर इन शॉर्ट में बोलूंगा इस मैं बार वही बोला कि टाइम पास से बहुत कर रहा है. मेरे पॉइंट वही बोलना था कि लोग इज कम अगेन टू लिवरपूल हु आर शोइंग फॉर्म. प्लेयर्स आर कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी. नूनेज ने फाइनली गोल मारा, मतलब वो तो बड़ा ही उधर ही हो गया. न्यू ईयर रेजोल्यूशन ब्रेक हाँ वो उसका. लोग कंप्लेंट कर रहे थे नूनेज गोल नहीं मार रहा गोल नहीं To मार be fair, we had one bad game, and that was the game where Havertz was suspended. So now that Havertz is back, we're sorted. Like, I mean, ठीक है. In hindsight, it is obviously Anfield away, We'll see. away fixture, draw not bad. ठीक है. Yeah, no, Lost to West Ham is probably, but you can say चलो. मैंने बोला था लास्ट एपिसोड में There by were the a way, lot of I won't key be surprised कि हार जाएंगे West Ham, Bro, but there I were a predicted lot a draw. of key factors that played a role there. I don't think it is a reflection on the team. Like as a team, we had almost 30 attempts on goal. मुझे
एक ही चीज प्रॉब्लम है यहाँ पे, अगर अटेम्प्ट्स के पॉइंट्स मिलते तो हम भी आगे होते, फिर हमारा भी बहुत मुझे वही एक बोलना था कि हम लोग जो भी बात करें आर्सेनल लिवरपूल के बारे में, लिवरपूल आई थिंक आर गोइंग टू बी द नेक एंड नेक हॉर्स रेस विद क्लब 115. क्लब 115 इज कमिंग ऑन अ हॉलिडे, दे विल गो टू अनदर हॉलिडे, वापस आएंगे, बाकी 18 गेम्स में से दे विल विन 16. Yeah, but that's the literal white elephant in the room. What's up with Haaland? Is he going to play ever again? Haaland is coming back mostly after Sheffield, so मतलब वो winter break के So बाद after आएगा. winter break, after If at all he plays this weekend, he'll play 20 minutes, but yeah, mostly he'll be back after the 19 games in, 19 more to go. I think ये टाइटल रेस बहुत मजा आने वाला है, बहुत क्लोज होने वाला है. But again, मैं वही बोला, सरप्राइज नहीं होगा. हाँ, From your सिटी city, को अभी भी चांस है, वो बाकी लोग का, जो हालांड केडी भी वापस आ रहे, they will walk it. बाकी लोग ने अपने चांसेस लिए नहीं है No, उनको bro, आगे निकालने का. You know, but over the course of the last few weeks, I think we've realized that more than Haaland and KDB for City, Rodri is a very big. हाँ. It I depends think on how long Rodri is out. Rodri I का don't know कुछ how long- unbeaten record है. I think he's gone to some 40 games unbeaten. Bro, he's next level. अलग ही है. It totally depends on how long Rodri is out. I think that is the amount of chance that the other teams have to win the title. अगर जहाँ उसको कुछ हो गया तो ही वो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सिटी के पास ये साल गुंडोगिन नहीं है कवर करने के लिए एक दो गेम में. गुंडोगिन भी बहुत क्रूशियल था उनके लिए. मेरा पॉइंट वही था कि यार And they have only Kovacic, I think. एंड मेरे को क्या से क्यों लिवरपूल के बारे में बात कर रहा हूँ, बिकॉज द वे दे पुशिंग ट्रेंड इनटू मिडफील्ड, उनको आई थिंक आइडिया आ गया कि अगर वो स्लॉपी गोल कंसीड भी करते हैं, द बेस्ट वे इज टू पुश इनटू अटैक एंड गो विद ऑल सिक्स प्लेयर्स, बम्बार्ड द बॉक्स, यूज Nunez's height if not his finishing, Unless you have Declan Rice. You have no chance. lose Luis Diaz's cutting in, lose Jota's finishing, Bad, yeah, old club. Gapco rotation में, and Salah on the right timeless. ठीक है, And तो even if he finishes the way he did this at least they're using his height to pull players away right now. Very that basic. out of the box finish, dude. Did you see it? Bottom corner, fucking next time. I never वो thought he could hit the मतलब once in shot 10 on games target. वो ऐसे करता है, but ठीक है, they have 14 ऐसे कर लिया सीजन उनका है ब्रो. Endo in midfield is looking a little more and more solid. Liverpool के लिए promise है, and to United we'll talk about United now when we do our predictions. करते हैं. Bro, Salah, Suarez, Mane है. Let's do the predictions. There's something in this, bro. क्या है गेम्स? मैं वही बोलता हूँ, यूनाइटेड नॉटिंघम फॉरेस्ट पहला है, away. सैटरडे को अवे, फॉरेस्ट अवे, आर्सेनल आर प्लेइंग फुलहम अवे, एंड वी शुड डू लिवरपूल न्यूकासल. आई फील कि वो थोड़ा बड़ा एक गेम है. हाँ, लिवरपूल करते हैं ना, देखते हैं. लिवरपूल न्यूकासल, लिवरपूल एट So होम, basically, Liverpool, London Newcastle derby, है. mid-table derby Wow. and लिवरपूल न्यूकासल कभी है? संडे. संडे तो 31st, मतलब 31st को. नहीं, सैटरडे नाइट संडे. 31st को only Arsenal and Tottenham. नहीं नहीं, इट इज ऑन फर्स्ट नाइट, ओह, 131st नाइट. नहीं 31st. Oh, first. आर्सेनल इज 31st. फर्स्ट नाइट मतलब मंडे नाइट. ओके. ओह, तो देन आई एम गोइंग फॉर अपसेट देन. तो पहला कौन सा गेम करना है? Bro, Liverpool Newcastle में upset कौन सा? लिवरपूल न्यूकासल मैं बोल रहा हूँ कि मंडे नाइट गेम, फर्स्ट गेम ऑफ द ईयर. आई थिंक न्यूकासल विल गेट अ ड्रॉ. Draw. एट एनफील्ड. हाँ, मुझे लग रहा है कि He's comparing Newcastle to United and Arsenal. तो मुझे लग रहा है 1-1. Liverpool Newcastle. I think Liverpool will still take it to 1. मेरे ख्याल से न्यूकासल look very laggy. Trippier himself said it in an interview. Salah and all looking in form. Last game before AFCON. I think Liverpool 3-1. अरे हाँ, वो भी लास्ट गेम. हाँ, Salah last before AFCON. Liverpool 3-1. Arsenal away to Fulham, London derby. Oh, dude, this is the. I remember, bro. This time used to be amazing when Liverpool was in the lead when Mane and Salah would both go away. Everyone would be like, "Now we have a chance." This time it's only Salah. Huh? हमारा होना ना जा रहा है तो यू हैव अ चांस. Bro, तुम्हारा होना ना चाह रहे तो you have a chance. Okay, quickly. Fulham, Arsenal, Arsenal, Fulham. Fulham. Arsenal, Fulham. I think 2-0 to Arsenal. 2-0 to Arsenal. I think it's about time that we have a definitive game And a clean sheet. and a clean sheet, double clean sheet for me. मेरे ख्याल से 3-1. I don't think clean sheet. Arsenal Pereira and our Willian will come. राहुल together. हिमेनेस वापस आ जाएगा, वही. हाँ, One shitty ass. मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि वापस आर्सेनल में ड्रॉप पॉइंट्स. तो करते आई विल prediction. गो फॉर अ 2-2 अगेन ड्रॉ. मेरे को लगता है लिवरपूल आर्सेनल दोनों, अरे सॉरी, हाँ, वो दोनों ड्रॉप करेंगे. तो आई विल गो फॉर अ 2-2 और एक ड्रॉ. यूनाइटेड अगेंस्ट देयर बेस्ट विशेस. मुझे मालूम है कि उनको हमारे लास्ट दिन पे भी डिसअपॉइंट करना है, बट नहीं कर पाएंगे. नॉटिंघम फॉरेस्ट. नॉटिंघम फॉरेस्ट अवे, नूनो एस्पिरितो सांतो थोड़ा पकाएगा, लेकिन 2-0 टू यूनाइटेड. हाँ, मैं रिवर्स फिक्चर देख रहा था कि 2-0 नहीं, सॉरी 2-1. नॉटिंघम ने 2 गोल मारा था लाइक ओल्ड ट्रैफर्ड पे, 2 गोल लाइक 7 मिनट में, एंड देन वी केम बैक टू विन 3-2. वो साल में एक बार होता
अभी हुआ पिछले हफ्ते हुआ। इलांगा scored more goals Oh, हमारे forwards के fuck, compare. yeah. Chris Wood, they did well this मेरे week. ख्याल से लेकिन United 2-1 scrappy win बची जाएंगे. I think 1-1. हाँ, I'll go for a 1-0. To United. 1-0 to 1-0 United or United. what? Clean sheet रख पाएंगे मुझे वही लगता है. स्क्रैपी मतलब जीत जाएंगे 1-0. 1-1 for me. Onana's last game, hopefully he also doesn't have to disappoint us one more time before going to But Arsenal. you want to say hopefully he goes home and doesn't come back. आराम for it. But guys, ये हमारे predictions है. Please let us know your predictions. Episode is already 26 minutes long, so I think 24 minutes पे किधर count off होगा. Any last words for the New Year's अपन everyone? सीजन का बेस्ट गेम बोलने वाले थे कि सीजन का बेस्ट मेमोरी Season में साल का ना. This साल का बोलना है तो तेरे लिए नहीं तो वही होगा मतलब कि this midway point ना. जो हाँ. आर्सेनल टाइटल नहीं जीत पाया वही होगा तेरा बेस्ट मोमेंट. VAR is his best moment of the year. हाँ, तेरा बेस्ट फ्रेंड वार. No, but I like the fact that Arteta comes in the presser and he's like, I don't know what happened. We could have done better. Okay, no, quickly, your best moment of the year so far this season. यार सीजन Season at the halfway. I would say I can't say a match moment, but season defining moment was Declan Rice. मेरे लिए यार इतना बकवास सीजन रहा है कि ना। ज्यादा मुश्किल नहीं है टॉप पिक करना. 3-4 मोमेंट ही है. आई से तो लिवरपूल नहीं यार. आई नो मैं ड्रॉ को सेलिब्रेट कर रहा हूँ मगर जो मजा स्क्रीनिंग में मुझे आया उस दिन वो मेरे को लगता है सीजन का बेस्ट. As a United fan, don't you think your best moment should be the time where your team actually नहीं, came मैं together? screening- And when Maguire was down and out, Onana said, "I will outdo you so that the spotlight goes off." नहीं मैं बोल रहा हूँ स्क्रीनिंग पॉइंट ऑफ That was the moment where you thought, लिवरपूल "This is the फैंस team." हमारे बगल में बैठे हुए थे वेटिंग कि लिवरपूल जीतेगा एंड टू that disappointment. आउटसिंग देम पूरा गेम में मेरे को लगता है सबसे मेरे लिए सबसे हाईलाइट था. बहुत मजा. मेरे लिए it was actually a tough one draw है लेकिन I think I will go it was actually redemption arc of Harry Maguire कि you know generally इतना कोई player insult खा के 2 साल दुनिया भर घूमता है उसको insult मिलता है पब्लिक में मिलता है MPs in the parliament ऐसे गाली देते हैं गाली but नहीं जो देते, compare him to garbage. but that's garbage it's really insulting after a point right for me it's as equivalent as the Unai Emery good evening I think it's very insulting it's not a funny thing anymore एंड बोरिंग हो But चुका है. see, Boring है. Very good evening. He did that. He was doing something. It was funny. Harry Maguire was playing shit, bro. Now what do you do? I mean my point is But you compare- drag it for too Yeah, long but I think You this drag it for proves too कि- long But he's not played better ना after. मुझे वही लगा कि हैरी मैगवायर he did सोशल मीडिया एक अलग दुनिया है जहाँ पे बहुत गाली पड़ता है नहीं उसको मुंह पे बोलते थे गाली, bro. बट ठीक है यार. आई थिंक एवरीवन गोस टू द When डाउन you फील्ड. get paid so much, if you सचिन play का badly. भी सचिन का भी एक बैड फेस था तो जहाँ पे पेपे को बहुत भी- कुछ नहीं पेपे- कर रहा था. पेपे को भी इतना तो गाली मिला ना. Useless 70 बट million. पेपे ने लाइफ में कुछ भी नहीं किया. हैरी मैगवायर ने बहुत कुछ किया है लाइफ. हाँ but अभी garbage है ना. 80 million लेके हग रहा है तो फिर अगर 70 नहीं पर million उसने लेके दिखा दिया कि हाँ, ही इज डिसेंट यार. वो हाँ, काफी 3 अच्छा. बार के बाद ना अभी कोई नहीं बोल रहा है. Bakwas. I'm just saying, the fact that a player can come out looking good, redeeming himself, and being classy about Yeah. it, fair play. But my best moment so far of the season, You're supposed to play well when you're getting 80 million, bro. what? Of course. No, being classy. नहीं इतना You क्रिटिसिज्म can't be के classy. You बाद can't do shit about it. If I you mean, don't we play have well. Jadon Sancho who's equally. आई विल obnoxiously कंपेयर इट opposite. टू हिम टू अनन्या पांडे. लाइक अनन्या पांडे का इतना बुरा ही हुआ मगर साल के 2 अच्छे मूवीज उसके निकले. She still, whenever they click a picture, at least she looks pretty, na. She looks like a fucking refrigerator. Anyway, that was on top of my mind, but I will still leave it as this last game. It might seem reactionary, but old Boxing Day, everything against you, chips are Yeah, fully yeah, down, yeah. 2-0. We saw the Old Trafford fighting spirit again, Alex so grateful Piazza for again. that. And on the note, so Alex Ferguson's birthday coming up on 31st, right? What is our wish for New Year's quickly? What do you wish for New Year? Quick, 10 seconds. Arsenal to win the league, dude. Fuck it. That's it. Simple. आई वांट टू लूज सम वेट यार. बहुत हो गया अभी. Yeah, it could have been personal I also, want to but- get back to my routine, lose some weight, and United somehow win the FA Cup. मेरे लिए बहुत मजा आ जाएगा अगर. By the time my son develops memories he can remember, United are not shit. Anyway, thank you so much for tuning in, Harry guys. Maguire को भी 3-4 साल Happy लग New Year. We will see you in the New Year, guys. And And वीडियो निर्वाण खत्म होने having के his पहले last और एक word. शॉट जमाल जमाल. VAR. बोल दिया.